A very warm good morning to class 3 student. Today in science we are going to revise the chapter number 5, that is plants in the surrounding. Okay, so this chapter we have already studied before examination, but let's revise once again so that you will write the answer question in your book as well as in your copy. Okay, so we studied that there are different parts of the plant. Some part is called root and shoot. There are two main parts, that is called root. Root is under the soil. If this is the brown part is the soil, that whatever the things which are under the soil, that is called as root. And whatever the thing that is above the soil, whether it is flower, leaf, branches, these are called shoot. Okay, now let's study about the root. Root, what are root? They are the tiny hair which is that is called as a root hair, and it is, what is the main purpose of root? The main purpose of root is to fix the plant to the soil. वो क्या करता है? प्लांट को फिक्स कर देता है ताकि प्लांट गिरे नहीं. Another thing, that is it absorb water and mineral, and sometimes it store food also. So there are two main type of root, that is tap root and fibrous root. Okay, what is tap root? Tap root किसको बोलते हैं? When a long and thick root is there, और small root ना इसके बगल से grow करते हैं, they are called tap root. The example of tap root are turnip, radish, carrot. Okay, what is fibrous root? फाइब्रस रूट में देखो डिफरेंस क्या है. यहाँ एक मोटा सा रूट है ना, ये सब रूट ही कहलाता है. ठीक है, तो these are the thick root, while in fibrous root there are many small size hairy like structures. See, बहुत सारे roots एक जगह से निकलते हैं, they are called fibrous root. When many roots of different size grow from the end of the shoot, यहाँ सॉइल के नीचे से बहुत सारा रूट निकलता है, that is called as fibrous root. So now what is the main function of root? The main function is fix the plant. It fix the plant to the soil. It also absorb water and minerals, and some roots store food like turnip, beetroot, carrot. ठीक है, आप कैरेट खाते हो ना, गाजर खाते हो ना, तो गाजर carrot is a type of root, turnip is a type of root, radish is a type of root. So ये सब एक root होता है जिसमें food store होता है. Understood children? So there is also a time to recall. So there is a time to recall where I have already done it. This is the this is the fill in the blank. The part of a plant is divided into two parts. The part of the plant that grow under the soil is called root. The part of the plant that grow above the soil is called shoot. The two main types of root are tap root and fibrous root. Carrot is an example of tap root. Rice is an example of fibrous root. So मैम ने ये दिया है, आप क्या करोगे? What you will do? You will write it in your book with pencil, and the same thing you will write in your copy. ठीक है, that will be your homework. If you have already done it, don't do it once again. Now let's talk about shoot. So what is shoot? Shoot is having lot of parts like stem, branches, leaves, buds, flowers, fruits. ठीक है, अब stem, what is the main part of stem? This is a banyan tree. इसका ये क्या कहलाएंगे? इसको stem बोलेंगे. और स्ट्रॉन्ग एंड थिक जो स्टेम रहते हैं उसको कहते हैं ट्रंक. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रंक और स्टेम? इट होल्ड द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट. ओके, नाउ these are the function of stem. The stem hold the plant upright and erect to get sunlight and air. It carries water and minerals absorbed by the root to the leaves. रूट ने जो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर एंड मिनरल्स, तो वो लीव्स तक कौन पहुंचाएगा? स्टेम पहुंचाता है. इट ऑल्सो कैरीज फूड मेड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट.
ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेम. नाउ लीफ. I have already taught you all this chapter. I am just revising you once again. So have you seen the leaf? So you have seen lot of leaves like this. Leaf is having lot of main parts. Many main parts or many parts. The flat surface is called the leaf blade. I am just giving you example of this leaf. ये जो flat surface है ना, this is called leaf blade. ठीक है, ये जो ऐसा चौड़ा है ना, इसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड. अगर आप केयरफुली देखोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऐसा पतला 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 वेंस गया ना, लाइंस गया है ना, और ये बीच वाला जो मोटा सा गया इसको क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं. और ये जो साइड से पतले पतले गए इसको क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं. अब लोअर साइड, ये लोअर साइड है, लोअर साइड में छोटा छोटा पोर्स होते हैं, वो आपको नहीं दिखेगा लेकिन बहुत छोटा छोटा पोर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. ठीक है, तो लीव्स आपके घर में भी होगा. ये जो फ्लैट सरफेस है दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. द मिडल पोर्शन विच इज अ थिक वन दिस इज कॉल्ड मिडरिब. दिस द स्मॉल स्मॉल लाइन्स इसको बोलते हैं वेंस. एंड इन द बैक साइड there are small pores which is called stomata. Now what is the function of this leaf? This leaf or the function of leaf is they are called as a kitchen of a plant. आपके घर में किचन में क्या काम होता है? खाना बनता है. The same way leaf में plant के खाना बनता है. They make food for the plants. ठीक है. Another very important thing, they give out oxygen. हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. तो ये ऑक्सीजन देने का तरीका कहाँ से? वेयर वी गेट द ऑक्सीजन? दीज लीव्स. और ये कहाँ से? बैक साइड बोला ना, द लोअर साइड, ये पीछे वाले साइड में जहाँ बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, यहीं से ऑक्सीजन हमें मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है. नाउ दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग, एक ये कौन से कलर का है? लीफ कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का. तो इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. व्हाट वी कॉल? क्लोरोफिल. सो दीज क्लोरोफिल ये हेल्प करता है लीफ को टू ऑब्जर्व लाइट, एयर, वाटर एंड सनलाइट में ये खाना बनाते हैं. ठीक है. सो what is why this leaf is green? Because it's having one substance that is called chlorophyll, and here only these help us in the presence of light and water and air. They make food. Some leaves store food, जैसे spinach, lettuce, cabbage. They store food in that. Okay children. Some leaves lose extra water. अगर ज़्यादा पानी है तो water vapor भी इसी से lose करते हैं. Now another very important thing, bird and flowers, fruits and seeds. ये मैंने पढ़ाया है आपको, आप एक बार फिर से इसको पढ़ना. टाइम टू रिकॉल, ये वाले को भी मैंने करवा दिया है, बट यू जस्ट राइट इट वंस अगेन. स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. द थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक. द फ्लैट surface of leaf is called leaf blade. The central vein of the leaf is called midrib. Most leaves appear green because they contain a substance chlorophyll. Now this is called as germination. Germination में क्या होता है? There are some important things. This the small baby plant is called embryo. ये जो छोटा सा green color का plant, आपके पास ये picture होगा. You just see this green color. ये green color इसको हम लोग बोलते हैं embryo. Okay? Now ये every seed is having embryo in it. अगर if they get enough water, warm, then they grow into a plant. इसका outer covering को क्या बोलते हैं? What we call as a seed coat. And in the seed coat they are having a very thin layer where they are having a temporary food supply. तुरंत का food तो उनको मिलेगा नहीं क्योंकि लीफ तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है. तो उनको कहाँ से मिलेगा खाना? एंडोस्पर्म से. ये क्या बोलते हैं इसको? एंडोस्पर्म से. एक स्पेशल लीफ रहता है इसके आगे पीछे, दैट इज कॉल्ड कॉटिलेडन्स. तो ये और सीड लीव्स, इसको क्या बोलते हैं? सीड लीव. ये देखो, ये जो है ना, ये लीफ ग्रीन,
These are called cotyledon. ठीक है? Understood? And this total process is called germination. Now children, there are different kinds of seeds. Some seeds are used for plantation, some seeds are used for eating. And you read this thing, care of the plants, how to care the plants, ensure enough sunlight, water, regular basis, prune the plant wherever they need. This way this chapter is revised, and I have already given you the video of this one, plus I have given you the answer question PDF. So look up the answer question PDF, write all the answer question in your book and copy. Understood? Thank you children. After watching this video, you will start writing your answer question of chapter 5 in your book as well as in your copy. Thank you very much. Take care of yourself. Children, these are the answer questions of chapter 5. Stop the videos and write in your classwork copy as well as in your book. Okay?